उसके बाद ऐसे मोड़ते हैं, फिर ऐसे करके स्वागत है दीदी आपका लाइव में। लड़के क्या दिए तो लड़के आज ऐड नहीं मिला क्या? कुसुम दीदी आज हम आपसे सॉरी चाहते हैं क्योंकि क्या हुआ, आज सुबह मैं आपके लाइव में गई थी, सुबह गई तो लाइव ही बंद हो गई थी, और जब दोपहर में गई तो जैसे आधा घंटा आपका सपोर्ट किए वैसे ही मेरी लाइव मतलब मेरा रिचार्ज ही खत्म हो गया। अच्छा, तो मेरा रिचार्ज खत्म हो गया और मैं कुछ बता भी नहीं पाई, ना बाय बाय कर पाई, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरा रिचार्ज खत्म हो जाएगा। तो हम सोचे यही बोली होंगी कि आज कैसे सपोर्ट की, अच्छा सपोर्ट ही नहीं हुआ, तो हम सोचे चलो अब लाइव में आएंगे तो मैं बता दूंगी। नेट नहीं चल रहा था, जब देखी तो मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, तो अभी हम रिचार्ज करवाए तो जाके लाइव आए हैं। रात में कटता है का है रात के जो ना काटे बैठा है, हमरो काट दे हटा सही कर। कैसे कटबे? पूरा दिन छुट्टी नहीं पाए ना रहे काटते हैं जैसे अपन काटते हैं मंजन कहीं नहीं आ रहा तब सही कर नीचवा करत ऐसे लगावत है कि हुआ फोनवा नहीं यार
अरे अब 9:30 कहें हमका लागत 9:30 9 9:30 कहीं हाँ 9 9:30 कहीं है तो हमका लागत और 9:30 बजे कहीं अब देखा तो नहीं लगा ना रात दिन अब थोड़ो तुझको ट्रैफिक हो तब वहीं रहे अब बाजार सजार सब खत्म हो गए जैसे रोवत है कि मरे खाली है का चुप आवाज बंद कर देने
स्वागत है भैया, मैं बाहर आई हूँ इसीलिए आवाज़ को म्यूट करके रखी हूँ। सब बढ़िया है, अपना बताइए हाल चाल।
स्वागत है पंकज भाई। सिंपल बच्चा अभी मैं बाहर गई थी भैया, रोड पे तो गाड़ी वाड़ी की आवाज़ भी आ रही थी। मैं तो सोची कि बैक कैमरा से दिखा दूं सबको, फिर हम कहे नहीं दिखाएंगे, सब लोग सोचेंगे कि इतनी रात को कहाँ घूम रहे हैं, तो आवाज़ बंद करके रखी थी। मेरा माल आया था, मतलब बनाने के लिए लेके आते हैं, छोड़ने लिए ना, तो छोड़ने आते हैं और लेके जाते हैं जो बनाए जाते हैं। पर आए थे एक सेब रखा जा रहा तो है। हम वहीं से बाहर रोड, इसलिए आवाज़ को बंद करके रखी थी मोबाइल, क्योंकि इसी पे फोन भी आता है। अभी घर पहुँची हूँ। राजू से कॉमन करेंगे पंचान में तो देखा लक्ष्मी और बताओ भैया क्या क्या हाल चाल है, तबीयत पानी कैसी है? क्या है? ले तो मेरी ले ले भैया। खाना ले एकदम ये। पतली कमरी है, बोले हाय हाय हाय। एक तरह नजरिया बोले दक्सा दक्सा। एक तो रात पे गुड्डे परेशान। बैक कैमरा ही है, बैक कैमरा इसलिए करके दिखाने वाली थी क्योंकि मैं माल ली थी तो हम अपने आप को तो दिखा नहीं सकते, तो बैक कैमरा से लोकेशन दिखाती सबको कि मैं कहाँ हूँ इस समय। एक गुड्डे यहाँ और फ्रंट कैमरा से तो आप मैं खुद ही दिखती ना, और हम माल लिए थे और गिर में गर्मी लग रहा है। तो माल लिए थे तो सिर पर पल्लू भी नहीं था मेरे, इसीलिए। और कैसे उठा के अपने यहाँ का रीति रिवाज है, सिर पर पल्लू जरूर रहता है। मैं कभी सिर पर से पल्लू हटा के वीडियो नहीं बनाती। गाल फट रहा है। आवाज ना कर जा, आवाज खुली है। दिखा गाल फट रहा है। तू गाल को फाड़ दिया। नहीं खड़ा जाता, मुंह खड़ा जाता है। सोने है। मेरी साल सीखी सीखी तो तने सुंदर आवाज बंद करा दोनों जने, नहीं बहुत मार मारा हम बता देते हैं। देख मुझे कितनी सी जगह मिली, तुझे कितनी जगह लगी। मैं क्या कर, देख के बात कर, देख इसलिए तो मेरे गोडे चपका रहा है। आज की बात ही है। एक पापा गोडे इतनी रात को आप नहीं, मेरे सोसाइटी के अंदर आते हैं भैया, उनके घर नहीं गई थी, मतलब सोसाइटी के अंदर गेट पर आते हैं। सोसाइटी के अंदर जल्दी किसी को आने नहीं देते हैं, वॉचमैन रहता है ना, तो गेट पर आते हैं, वहाँ से दे के चले जाते हैं। अपने गेट पर गई थी, दिव्यांश के पापा और हम दोनों लोग गए थे। और घर भी जाना रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अभी रोड पर मतलब इतनी समय जेंट्स लेडीज सब घूमने निकलते हैं बाहर, सब बैठ बैठ के बाहर की हवा लेते हैं। तो सोवा का 12 बजे तो उनके अलावा फिर तो और आ जाते। चद्दर तोड़ना है अभी
सिंपल कभी ठंडी लगती ढीला कैसे हुआ? दिखसाना ढीला आप बताओ भैया खाना पीना हो गया? ये देखिए इतना ढीला है। तेरे को कैसा चाहिए? कैसे में वो दे दो। हाँ वो गेट पर आते हैं। ये खाता है। मतलब क्या है उनके घर नहीं जाती जल्दी से, जैसे ज़्यादा बना लेती हूँ ना तो डायरी में लिखवाने के लिए जाती हूँ अभी दिन में। बाकी उनके पास बाइक है तो हम नहीं जाए, कही थी हम लोग हैं तो वैसे लोग हैं तो बाइक है तो कही थी हमारे सबके घर पे छोड़ दे तो घर मतलब आ जाती गेटवा पर तो चली जाए तो सोसाइटी के अंदर ही नहीं आवे देते ना कि तो बाहर वाले इंसान का ओकरे बड़े आवे के बड़े फिर बहुत पूछताछ करे पड़ते नंबर वंबर लेके तब सोसाइटी के अंदर आवे देंगे। वॉचमैन बैठा रहा था गेट पर बैठे तो बाहर से आ जाते हैं, इधर से हम चली जाए थी ले लेने जाते हैं। हमारी जिंदगी की सीख है। क्या क्या सीखा ऐसा बता रही थी कि उसके यहाँ की लड़की चोरी आज आज करते थे आशा आई थी हाँ? कल आशा भी आई हाँ बता और बताओ भैया खाना पीना हो गया? आज बहुत जल्दी आई है। आज क्यों सपोर्ट मिल गया इनका? एक चोले कहाँ और दुर्गा माँ की देर में हाँ खाना पीना हो गया भैया। पूजा में यही माल के चक्कर में अगर ध्यान से पापा जागत रहना है अपना सो ही जाती हैं चोर और बहुत वजन पड़ा था हमसे नहीं जाता है तो इनका लेके जाए पड़ा था। बड़ा कुंभा के पूजे जो आपको चौक दरवाजे के पास कहाँ सोई थी? हमारा माल रहा तो नहीं सोई भैया तो कल हो तो आपसे बात करते हैं परसों सोई कल है या सोई रहे? हाँ कल माल नहीं रहा कल सोई रहे। माल नहीं रहा तो सोई जाए तो भैया कल माल नहीं रहा हमारे पास और क्यों बात करे वाला रहत नहीं तो फिर का जा गए। थैंक यू करत रही थी पौड़े के तो सोई जाई थी हम समझी नहीं उनके आई है तो हमसे करते हैं। ऐसी कोनो बात नहीं है सोई जाएगी तो क्या हुआ? आपके ईमानदारी से सपोर्ट रहा तो हमको कोनो दिक्कत नहीं रहा तो या कि फिर आप हम सोई जाए थी तो आप करना अच्छा लगे तो चलो जावा करें तब वो कोनो प्रॉब्लम नहीं ना रोज सपोर्टे तो करत ही नहीं। ला मोबाइल चार्ज में लगाई देती बहुत मजा आई एकदम सीधा सीधा उमर आम के हड़बड़ाए जाते रहे हैं जहाँ सपरा लगा के छत बंद हुआ सपरा लग जो एकदम अच्छा मोबाइल हम हाँ वही तो हम देखी थी आप बाय बाय कहीं बताओ थी तो हम सबके मैसेज देखते रहे कैसे नहीं है आप चाहे जब निकालती बाय बाय करती ना और यही चाहबो करी यही आदत हमरो है चाहे जेकरे लाइफ में रहा कम से कम बाय बाय करे से तो पता चल जाता है कि हाँ निकल गया। तुझे रोना है तो रोना मुझे थोड़ी नहीं रोना कभी भी
और बताओ झूठ मत तबीयत कर। पानी कैसे है? अब आयल डरा दिया गधा। मस्त जगह रहती है तब तो क्या करे बुड्ढों को मत बोलो ऐसा हमें दुख होगा कि हमने लेके सोचा हमें खेलते हैं और हमें ही बुराई करते हैं क्योंकि बुराई नहीं करते हैं बड़े हैं तो उनको जगह ही जाओ उनको बोलो जिसकी गलती जिन्होंने इनको बनाया है थोड़ा छोटा बनाया जो बहुत बड़े बड़े डैडी के लिए कर सकते और बताओ भैया मम्मी के का हाल है? ऐड खत्म है कि हैं। ये ऐसा तो कोई मतलब बड़ा सा डैडी ये ऐसा ही है। मैंने तो इसके पिक्चर्स में तो देखे भी नहीं ये ऐसा के घर देखने था इतना बड़ा डैडी तो मतलब छोटे छोटे गुड्डे लगता है ये लेती हूँ क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं जो अकेले से खाली दो लोग को देखता ये वो बोलता था जो छोटा बोलता था कि मैंने उसे धक्का दिया हमारा उसका उसके घर पर देखा कि आसुरी और किसी के घर में पिता किसी के घर पे पहले जाओ तो सही है ना कौन मैं खाली खाली डैडी को देखती तो मुझे बस दुकान में देखा है गाड़ी पसंद है कि वो रेल वाली किसी को खेलना कभी देखो आशा के यहाँ तो क्या खेल रहे थे कमेंटर रुक गया है काम चला कमेंट रुका रहा अच्छा मम्मी ठीक है अच्छी बात है ठीक है आराम है जो चीज़ बताएं आराम भले हो ही पर दवाइयाँ तो चल रही तेरी ना और आज विकास के लाइव का है नहीं 40-45 दिए और अभी बताया मोबाइल 4G ले 5G ले 5G ले आएंगे ना सब सोए भी नहीं डाला अच्छा व्यस्त
पता नहीं चले। बड़ा कर दिया। चलो बढ़िया है, तब तो 5G आते हैं वो एक दूसरा रास्ता मतलब अच्छे है। अब लगता है। उतने में 5G मिलता है, 4G मिलता है, तो 4G लेस कोनो फायदा नहीं, कम से कम 5G में नेटा तो मिली अनलिमिटेड। यही से हम लोग 5G रहा है सस्ती हमारे आटे, आप कैसे सस्ती नहीं आते है। तो बराबर कर देती है। खाना है। मोबाइल तो बहुत पैसा खा डालती है। बस सो जाना के वजन बहुत रहना है तो बंदा लाऊंगा हालत खराब है यही तो कल के फोन वाला लगाएंगे तो हम खाएंगे बस का नहीं है हालत खराब है जे किसी ब्रिटेन ला से शायद हम तो ड्रेस लावे करे ना तो मारन हो जाए कल एक बार हम फोन नहीं उठाओ पानी की लगाए तो नहीं टाइम दे तू उधर है ना सोवा था तो हम गए अकेले बस पे है नहीं भैया इधर से नहीं जाएंगे उधर से ले जाएंगे वहाँ मजा है तो ये ट्रेन देवे कल जय श्री राम भैया, स्वागत है लाइव में। आप बताइए क्या थैंक यू अर्चना दीदी। कितने टाइम पड़ गए पंकज भैया? शॉर्टकट में बताए दे अगर न मन का है तो जिनो बताया। आप बताइए भानु प्रताप भैया क्या हाल चाल है आपका? लाइव डन करने के लिए थैंक यू। और तो सब बढ़िया है भैया, मैं ठीक हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं? आपके भजन कितना बजे शुरू होते हैं भैया? आपके मतलब भजन कितना बजे शुरू होता है? आप टाइम बतावें तो हम आपके लाइव वीडियो आज करे थे जो नहत करे हमको अच्छा लगता है। हाँ तो अब पहुँच गए, अब चाबी क्यों नहीं? कौन चाबी रख देना मंदिर पर रख दे, मंदिर पे मंदिर पे रख दे। नहीं टांग दे। वो जो खिल्ली है ना, खिल्ली जिसको बात तो सही है। आईना टांग के दे, उसके नीचे बात तो वो झिल्ली होता है ना। अच्छा वो डॉक्टर तो कैसे चले हैं फिर सुबह 7:45? अच्छा भैया। पापा हम टांग दे तो 5G में फिर जियो का सिम नहीं चलता है तो कैसे चलेंगे फिर? नहीं तो पता हूँ रख दे सवेरे टांगा व्रत पर भी तो हमसे मतलब नहीं है। जियो का सिम तो हमारा आटा सिम में 4G ना पे पर 5G तो पकड़ा था दोनों हमारा जो कहाँ पकड़ा? 5G नहीं पकड़ा जियो आटे उनके यहाँ वोडाफोन के अलेबल है नेटवर्क सिम चला था। हाँ वोडाफोन तो वोडाफोन में ना पकड़ी ना वोडाफोन में उनके फिर कहा है ये नहीं है 5G कहा था। तो लेने से कोई फायदा नहीं है ना। है। बाय बाय दीदी, बाय बाय कुसुम दीदी। और बताओ भैया खाना पीना खाया है ना आप? भानु प्रताप भैया आप तो हमसे बड़ा हैं पर नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन अब बोली कैसे ते की वजह से नाम ले पड़ा था भैया आपसे क्योंकि अगर हम भैया अकेले बोली थी तो फिर आप समझे आपका या फिर पंकज भैया समझे कि भैया
उसकी वजह से नाम ले दिया है, लेकिन आप हमसे श्रेष्ठ हैं, तो जितना ही बनता है तो अच्छा नहीं लगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू सपना दीदी, थैंक यू भैया। पंकज भैया ठंडी पड़ती है। हमारे यहाँ तो गर्मी बढ़ गई अब। आप लाइव में सुन के समझ जाते हैं कि ठंडी बढ़ चुकी है, गर्मी बढ़ चुकी है। का देखी बेटी, दवाई नहीं लगाओ ना। हाँ कहाँ? माथा उठा माथा ऊँच खाला है तो बढ़ाई उड़ाई हो लहा ले जा, जब ना छिलवा दे तो फिर लोहार के लगे ले जा, ठुकवा के बराबर कराए। तो और कैसे ठिकाए ऊँच खाल है तो लड़ाई हुई है। आप खेलत है कहूँ गिरा होंगे तब तो ऊँच खाल बा इनका लड़ा है जहाँ ना उठ हाँ, या तो दिवाली से वाले में लड़ाई जाए बराबर हो जाए। अब और एक उपाय हम कौन बताइए? पंकज अंकल से पूछ लो कैसे जाना बराबर हो। कह देंगे वो उनके पास सब हुई छील छील के इनको सिया राम भैया, थैंक यू। छील के बराबर कोई नहीं। पंकज भैया दिव्यांश कमरे माथा ऊंचा खाला हो गया। अबे का छिलावा कर बस। हाँ भैया मेरा भोजन हो गया, आप बताइए आपका हुआ कि नहीं? और बच्चे लोग कैसे हैं? कल आज नहीं, कल वाली लाइव में हम आपके देख रहे थे भैया, जिसे आप बैक कैमरा किए थे, तो मतलब बच्चे बहुत छोटे छोटे टहल रहे थे, कैमरा के सामने आ जा रहे थे, तो आपकी लाइव नहीं बंद हुई कैसे? और सबकी लाइव बंद हो जाती है, बच्चे थोड़ा भी आ जाता है अगर कैमरे के सामने तो बंद हो जाते। पर 3 बच्चे थे, मैं देख रही थी, लेट में गई थी शायद थोड़ा, तो कमेंट नहीं कर पाई है कि किसी काम में जल्दी थी मुझे। मैं आपकी लाइव को देखी थोड़ी देर, 2-4-5 मिनट, उसके बाद वैसे छोड़ दिए, मैं कमेंट नहीं कर पाई, काम में ज़्यादा व्यस्त थी। और 2 बच्चे छोटे थे और हमें ऐसे लग रहा था 7-8 साल के बच्चे थे और 10 साल के बच्चे थे, बराबर कैमरे में दिख रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं कमेंट करके बोलूँ कि भैया लाइव बंद हो जाएगी आपकी, तो फिर हम सोचे कि डेली आते होंगे तभी आप बैक कैमरा से दिखाओगे, क्योंकि काफ़ी लोगों की लाइव बंद हो जाती है ना अगर बच्चे रहते हैं। अच्छा भैया हो गया। कहाँ ऊँच खाल है? कहाँ? हमका नहीं समझ में आ रहा। तो रहा है का दिक्कत ये है, दर्द होता है? हाँ अच्छा नहीं लगता। कैसे अच्छा नहीं लगता? देखे मैं तो कुछ हाँ तो रहने तो हो गया काम खत्म। जिससे पापा का हुआ है तो तुम्हारे भी हो जाएगा। पहले था इस तरह था, फिर निकल आए पापा की तरफ नहीं बीमार से लागो तो जब बेसन से शैम्पू लगाए तो क्या हो जैसे ना। मैं पूछ रही थी कितने रेंज तक है बजट में, बैलेंस में कितने तक पड़ गए मोबाइल ये आप?
एक दो महीना नेकलेस प्लास्टिक चला, फिर ब्लैक शैम्पू चला, उसके बाद वो हरा वाला एक दो महीना चला। ये कब है जौन चल रहा बेचारे था। बड़वा ना कब से बनवाए। और बताओ भैया, आपके यहाँ ठंडी कैसे है दिल्ली में? दिल्ली में तो है आप शायद। अब तो नेकलेस शैम्पू ही यूज करो। नहीं थैंक यू सपना दीदी, थैंक यू अर्चना दीदी, कुसुम दीदी चली गई हैं। पंकज भैया आप बताओ, सब बात छोड़ा, संजय दीदी के पास फोनवा करेगा हम कि ना? हम आज नहीं कह पाए, अगर कि हम सबके लाइव में सपोर्ट करते हैं तब रिचार्ज भी खत्म हमारा, तो हम रिचार्ज कहाँ से करें? फिर उसके बाद शाम के दिव्यांश के पापा कराए हैं, लाइव चला बड़े करवाए हैं। चलो तब तो ठीक है, 15:30। हाँ तो ठीक है, ये दिव्यांश के पापा यही बोलो, इतना बोलो तो हम तो हम कहें। अच्छा हम पूछो, मतलब आप मोबाइल पे सर्च करें मेट्रोला ऐसा कुछ आते हैं आपको, मोबाइल पे देखें तो कहें इतने रेंज के है, तो हम कहे पूछा तो हम। मैंने पूछा पापा बहुत पैसे में निकाल। राम राम दीदी, और क्या हाल चाल है? अरे 15 15:30। और क्या हाल है दीदी? बिट्टी अरे कैसे हैं? मैं इसके सर्च लगाऊँ तो अच्छी बात है। मोटरोला, हाँ 67। हाँ विकास बता रहे नहीं है। भगवान को सुहाने कैसे सुहाया, कभी ऊपर से खुल रहा है तो कभी समझ में नहीं आता दीदी, कम धीरे धीरे बोला आराम से, तो फिर गूगल सही सही लिखे तो गलत लिखे तो नहीं समझ में आता। रूबी कैसे हैं? आज बहुत लेट आया। हम सोच रहे थे कि देर से दिखा देगा दीदी तो आपको निकाल देंगे, क्योंकि मोबाइल में रिचार्ज नहीं रखती है, मोबाइल रिचार्ज नहीं रखती है दीदी, आ रही है दीपक वाली आ ही नहीं। तो क्या होएगा सपना दीदी, ऐसे तो हमका फर्क नहीं पड़ता, आपका 1 घंटा होएगा हो तो निकाल ले, चाहे 150 दिखे चाहे ना दिखे। 9:15 पर मैं अपनी आईडी लगाई थी दीदी, 10 बार
कोनो दिक्कत नहीं है, 1 घंटा नहीं दिखाता है। क्या करें? माल बना होता है दीदी। अच्छा ठीक है। हाँ बिट्टू, आप कमेंट करे तो थोड़ा जल्दी जल्दी मतलब अगर 150 करे के है ना तो फटाक से हो जाए। थैंक यू सपना दीदी। अम्मी कहाँ रखी है? इसे रहा कोनो दिक्कत नहीं है सपना दीदी, डेढ़ कुछ मतलब नहीं होता। निकाल ला एक दिन हम वैसे आपके लाइव में करे देखा है ये रख बहुत दे। परेशान रहे, जबकि मैं क्लिकर चलाते नहीं दिक्कत है तो फिर आधा घंटा स्ट्रक हाथ तब दिखा है। तो क्या जरूरत है सपना की तीन आईडी लगाने का? 2 आईडी है, 3 आईडी नहीं ना भैया। एक तो सपना वाली एक दीपक वाली, 2 आईडी है इनका। इनके पास 2 मोबाइल है हमारे देश में। और आप जागत रहा करें, दीपक वाली हो जाए तो वो सिम निकाल लेंगे। नहीं देखेगा ना, उस पर हो तो देखते हैं। थैंक यू थैंक यू। अरे निकाल ले सपना दीदी, आपके चार्ज नहीं आते तो निकाल ले, टाइम होएगा तो क्या करें? हम नहीं देखे देखा जब आज पे लक्ष्मी बैठे थी कि काली दोनों माई दिन का कहा थे हम लोग का बहुत कबो कबो नहीं होता तो उससे हमका काम चार दिक्कत बोतलें होती है। ठीक है, लेट। हम लोग कई बार आपको लाइव से निकली है कि नहीं दिखाए नहीं, बल्कि हम सोचते रहे जब पूछिए आप कब हो तो हम बताए दे कि नहीं एक टाइम से हम अपने बराबर आए हैं, आपको नहीं दिखाए, लेकिन आप चर्चा नहीं करें तो हम बताओ बनाएंगे। अभी अभी हम आज, हाँ आज अब केहू के लाइव नहीं रहन तो 35 मिनट तक आपके हम एक्स्ट्रा के हैं चाहे खाली है चला दे। क्यों एवं कि सुबह के लाइव नहीं चला तो हम छोड़ दे वैसे आता के हम लगा। बाय 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 भैया, ठीक है। लड़कन को डांटा तो है, अब लड़कन को सोना चाहिए, 10 बज गया है तो उन्हों का नींद खराब होती है ना, तो कुछ हमके नींद खराब होता है तो वही बड़े डांटा तो है। एक तो हमारे वजह से जागने में इतनी दूर माल के चक्कर में और वैसे भी नहीं सो रहे। एक ही बाडा रोड सही अलग हुआ तो थोड़ा कड़क रही, ज़्यादा ही नहीं आया आप तो शोर मचा रहे हैं। हम शोर मचावत है, मैं माफ है मार माफ है ना आत्मा को नहीं मानना चाहिए। थैंक यू अब शोर न मचोगे, अब सोए जाता हूँ। बोलगा धीरे धीरे बोलगा, बताए जाकर कहीं करना तेजी तेजी हो जाता है।
और दीदी रूबी नानी किया है कि घर है मुझे भैया आज हम फ़ोन नहीं कर पाए। वही तो आपसे कहा था ना कि दोपहर रिचार्ज ख़त्म हो गया है, तो और सुबह हम नहीं लगाए, हम कहे ड्यूटी पर यहाँ शाम की बात करबे, तो दोपहर हमारे जो ना कहथिन रिचार्जे ख़त्म हो गया, तो फिर अब लाइव चलावे के आधा घंटा पहले जो ना रिचार्ज के हैं तो हम बातें नहीं कर पाए। उनके चैनल में कुछ प्रॉब्लम है, उनके पास उनका चैनल अब नहीं है, तो वही के लिए परेशान ही है, उदास ही है। आपसे पूछते हैं कि कैसे वापस आओ। तो नसीब खराब ही है, दूसरी बारी 3 बारी चैनल बनाए, उनके चैनल जो नहीं पा रहे हैं, शायद ईमेल आईडी अपडेट होगी, कैसे का हुआ, उनके पास चैनल नहीं रहा, अब नहीं रहा। बहुत कोशिश करता हूँ पर चैनल वापस नहीं जाता है उनके पास। तो वही सब तुम्हारे लगाए रहे हैं आपसे कि कैसे चैनल हमारा वापस आए। ईमेल आईडी के नंबर जो रहा था सब लिखे रहे, पर कहा कि रूम खाली पर हम काज नहीं कहाँ गिराई दो, बहुत दिन नहीं है। कल बात कर रहे हैं, अब मोबाइल में रिचार्ज ना है। हाँ वो हमारे टाइम पर चलावे लगी भैया, तब हम कैसे जाए। पहले 3 बजे चलावत रहेंगे, अब हमारे समय से चलावत हैं, तो कैसे जा सकते, नहीं जा सकते। अब अगर एक आईडी अपने उम्र लगा देवे तो फिर हमका दिक्कत हो लागत।
कमरा में ढक्कन बहुत है ना, ढक्कन इसका चेक करके। और बताओ कौन सा तुमने ठंडी में कैसी लगी?
आवाज को म्यूट कर देता हूँ। बाकी ज़्यादा तो नहीं। हमको पता है कम कर दिए जान जान कमेंट नहीं करते हैं। सोचे तो हम कमेंट कर दे तो बोल जाते हैं।
बाय बाय अर्चना दीदी, बाय बाय।
स्वागत है दीदी। और बताओ क्या हाल चाल है, तबीयत कैसी है आपकी? सनी दीदी हाल चाल बता दें, अगर हमारा बात चाहते हो आपके पास तो। सीताराम सीताराम भैया। सनी दीदी हाल चाल बताएगा, तबीयत आपकी कैसे नहीं है? पता नहीं सो ही गई कि नहीं सो ही गई। अगर मैं आपके कमेंट देखती हूँ। नींद लग रही है। सब बढ़िया है दीदी, हमारा हाल चाल बढ़िया है। बस हम वही जानना चाहत रहे हैं, रिचार्ज खत्म हो गया है, ऐसे हम फोन नहीं कर पाए आपके पास। तो चैनलों के बारे में कुछ था कि नहीं होगा,
और तुम्हारा हाल चाल रहना सब ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है, सो जा, कल हम फोन कर रहे हैं। आज रिचार्ज खत्म हो रहा है ना, यादें लगाए हुए थे, खत्म हो गया फिर अगर लाइट चला टाइम पे लगाए हैं। सो जा आप, म्यूट कर दो। जब घर हो जाएगा कहीं जाएगा कहीं नींद आने लगी तो सो जाएगा, ध्यान फोन कर दो तो भारी चल आप म्यूट कर दो, नो म्यूट कर दे जा करिए। बस वही साड़ी भी है, मतलब एक जगह से बराबर में, हर जगह चाहे जहाँ हो बराबर नहीं मिलता है। जैसे जब जो ने चीज़ के मतलब ऑर्डर आवत है तो वही चीज़ मांग बहुत है, तो यही लिए तीन तीन जगह से पकड़े ही तो थोड़ा बनावत है। एक जगह से कांटे वाला लैस, एक जगह से कुर्ती, एक जगह से साड़ी के काम स्टोन वाला। अभी कुर्ती बन रहा है, लैस के कटिंग बन रही है। अभी टाइम पे साड़ी आवत है तो साड़ी बनाना चाहिए। कुर्ती मिली तो फिर दूसरी जगह से फोन आई तो कुर्ती लोग गए, एक जगह के चक्कर में रही तो बराबर नहीं मिल पाया। जय माता दी। सो जा संजू दीदी, परेशानी में आप सो जाओ।
मैं परेशान नहीं हूँ। अच्छा कौन बात नहीं, हमको पता है आप टेंशन में तो रखी हुई। कमेंट ना कर दूँ तो बता नहीं सकती। राधे 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 राधे। ठीक है ठीक है, सो जाओ।
थैंक यू पंकज भैया, आप म्यूट कर रही हूँ। सो जाए तब आज मैं खुली रह जाए।